It means we can conclude that any of the dynamic system may be represented in the nth order of the differential equation in the either in the output side and the input side. However, we have taken, or most of the book, most of the example, most of the most of the control system having the second order differential equation in it. Means second order, the third order differential equation, it means we are assuming in the output side of the second order maximum differential or the third order differential. How in the input side we are assuming that there is a no derivative, there is a no I'm repeating once again, it is very very important line. In the input side there is a no derivative side. No derivative is going to be found in the input side. इनपुट साइड में कोई भी आपका डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है। अगर होगा तो क्या होगा? सो अगेन इफ द इनपुट, इफ द फोर्स, इसको हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव, द डेरिवेटिव इनपुट साइड को कहते हैं फोर्सिंग फंक्शन। इनपुट साइड को हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं, दैट इज द फोर्सिंग फंक्शन, राइट। सो फोर्सिंग फंक्शन it is usually known, forcing function is usually known in the state space. Okay, so this input uh, is used in the state space analysis. So remember, there is a no derivative forcing function in the input side in the conventional control system. However, it may be there. So this is again the limitation of the classical control theory. We are not able to find the transfer function using these techniques. Again, using the Laplace transform techniques, right? Okay, so what happened when the derivative forcing function will be there in the output side, input side? Okay, we will discuss now. We will try to understand how this dynamic equation is going to be represented in the form of the state space, right? This is now our target. Okay, so our next discussion is the state space representation of nth order system of linear differential equation in which the forcing function does not involve the derivative term. पहले हम इसको समझते हैं, उसके बाद डेरिवेटिव टर्म वालों को भी समझेंगे. Is it clear? Any doubt up to this point? So if such representation is there, then the differential equation is represented like that: dn dt n by n yt plus a1 dn minus 1 dt n minus 1 yt plus a2 dn minus 2 dt n minus 2 yt plus dot 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 up to the a n minus 1 d by dt of yt plus, anyone can tell me what is the last term? A n yt. And since it does not have the derivative term in the input side, then only there is a constant, that is the ut, let's say the xit or ut. Is there any doubt in this equation? Please let me know. Is my voice audible? No, sir. Yes, sir. Any doubt in this equation? No, sir. No. तो इस इक्वेशन को we can represent like yn, okay, t plus a1 yn minus 1 t plus as an minus 1 y dot t plus an yt is equals to ut. Any problem? Where जो ऊपर में आप n देख रहे हैं, this n और n minus 1 और dot represent their derivatives. This is the n derivative, this is the n minus 1 derivative, this is the
single derivative, right? This is a single derivative. Okay, right? Also you have the value of y naught. You know the value of y naught, y dot naught. It means the initial value. The initial value you are aware with the all the initial value. Okay, together with the input. मैंने आपको बता रखा है पहले से कि what you need for the determination of the future behavior of the any system. First of all, you have to know all the state and all the initial condition, and with the input for t greater than equal to 0. Yes or no? T greater than or equal to 0. Then only you can determine the behavior of this system. Am I right? Am I right? Yes. Yes or no? Yes, sir. So now it means you know these things. I will take only 1 minute, then it will finish. So now let us define x1 is equals to y, okay, x2 is equals to y dot, and so on. xn is equals to, let's say, yn minus 1 dot. देखिए x1 को हमने लिया y, x2 को लिया y डॉट, इस तरीके से xn को क्या लेंगे, yn minus 1 डॉट. ठीक है, n minus 1 डेरिवेटिव. इज इट क्लियर? और अगर हम x1 को डिफाइन करें, x1 डॉट को डिफाइन करें, दैट इज x1 डॉट मींस व्हाट इज x1 डॉट मींस y डॉट. y डॉट को हम डिफाइन कर दे x2 से. लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. और Yes, sir. x2 dot is equals to x3 and so on. xn minus 1 dot is equals to, we can write xn, और xn dot is equals to लास्ट जो एक्सप्रेशन होगा, व्हाट इज दैट? आपका इक्वेशन क्या था? आपका इक्वेशन था yn t प्लस a1 yn minus 1 t डॉट 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 an minus 1 y डॉट t प्लस an y t एज इक्वल्स टू ut. यही तो था आपका. तो xn डॉट t, यही तो है आपका xn डॉट t. Yes. यस और नो? इट व्हाट विल बी दिस? क्या बनेगा ये? माइनस ऑफ क्या बनेगा बताओ? an xt और x1. यस और नो? दिस इज yt इज नथिंग बट x1. ओके, माइनस ऑफ an minus 1. क्या बनेगा बताइए, बोलो? दिस इज द an minus 1. तो ये क्या बन गया आपका? x2. वेरी गुड. अप टू X2. द माइनस ऑफ a1 xn minus 1 up to this term. Yes or no? a1 x to the power n minus Yes, 1. sir. और प्लस में क्या है आपका? दिस टर्म. दिस इज a u, right? This is the u. U. So you can represent this x1 dot x2 dot x1 dot. You can represent x like this one, x1 x2 x3 dot 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 xn, right? So where you can represent like x dot is equals to ax plus bu, where x1 is this one, a is, अब मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है इसको जरा देखते हैं. नेक्स्ट लाइन में a is, you can represent this because this doesn't have the a1 term. 0x1 you can write plus 0x3 up to the xn. समझ में आ रहा है ना? इस तरह से 0x1 प्लस 0x2 प्लस x3 प्लस ऑल, इस तरह से 0x1 प्लस 0x2 प्लस, इस तरह से ले सकते हैं हम लोग. तो a मैट्रिक्स जो आपका आएगा, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, और यू कैन राइट x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट x4 डॉट अप टू द xn डॉट. इस फॉर्म में लिखेंगे अगर हम लोग, तो इसको कैसे लिखना है? ax प्लस b. यस और नो? सो व्हाट इज a बिकम्स 0x1. देखिए यहाँ पे अगर हम 12 वाले में देखें पेज नंबर, तो 0x1 प्लस x2. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? 0x2 वाला 1 होगा, 0x3 0x4 up to the 0. Is it clear? In second term 0 Yes, sir. 0 1 Yes, sir. 0 up to the 0 and 0 0 यहाँ हो जाएगा 1, और लास्ट वाला टर्म जो है, दैट इज द लास्ट टर्म. यू कैन से हेयर x1 भी है, x2 भी है, x3 भी है अप टू दिस. तो यू कैन राइट हेयर माइनस ऑफ an minus of an minus 1 minus of an minus 2 up to the
माइनस ऑफ a1 और ये बन गया आपका व्हाट इज दिस देयर द x1 x2 अप टू द xn, राइट? ठीक है, प्लस व्हाट इज द बी मैट्रिक्स में देखा जाए तो u वाला टर्म, तो u वाला टर्म किस में आ रहा है? केवल लास्ट वाले टर्म में, यस और नो? इधर भी जीरो जीरो यू जीरो यू जीरो यू है सब में, यस और नो? सो यू कैन राइट हियर Yes, sir. Yes, sir. 0 0 0 up to the 1 लास्ट वाले में into u. Okay, so we have written like x dot is equals to ax plus bu. This is the equation final, right? This is the ax plus bu. Ultimately, and final equation y is equals to, what is the y? Y is equals to nothing but the x1. Y is equals to nothing but the x1. Okay, so you can write here 1. बाकी सब में क्या है? 0 0 0. और ये क्या हो गया? x1 x2 up to the xn, right? So the final equation becomes y is equals to cx. Here du is 0. Right? Any problem? Any problem in this No, sir. representation? No, sir. Okay. So tomorrow and from the next class we will